Dear students, my today's topic is membrane lipids, and this is part 2. Before this, I have already told you a few things about membrane lipids. We have already seen the details of this membrane, where which is made of phospholipid bilayer, and it contains so many other molecules also. So now today I am going to tell you about classification of lipids, membrane lipids. Membrane lipids are classified according to properties of polar head groups. Polar head groups हमने देखे थे, उसके accordingly उनको क्लासिफाई किया जाता है. Membrane lipids are found in eukaryotes, prokaryotes and archaebacteria, or these are classified in various groups, which are first group is phospholipids. It is further divided into glycerophosphoglycerides or phosphoglycerides. उसमें भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी वेराइटीज़ हैं. तो फर्स्ट इज फॉस्फेटिक एसिड, सेकेंड इज lecithin. Lecithin is a common name, and phosphatidylcholine is official name. Then cephalins. Cephalins may be some varieties are there. So phosphatidyl ethanolamine and phosphatidyl serine. Then phosphatidyl glycerol is there. Then diphosphatidyl glycerol, which is also known as cardiolipin. Then phosphoinositides or myoinositol. Then plasmalogens. Plasmalogens की varieties: phosphatidyl ethanolamine plasmogen, phosphatidylcholine plasmogen, phosphatidyl serine plasmogen. Then second group of membrane lipids is sphingolipids. It is further divided into sphingomyelins, glycolipids, cerebrosides, gangliosides, and then third major group is of sterols, and fourth group is of archaebacterial membrane lipids. So this is the total classification, and here in this session I am going to tell you about phospholipids. Phospholipids or glycerol 3-phosphate is the backbone of all phospholipids. As the name implies, phospholipids contain phosphorus in the form of phosphoric acid group at C3 of glycerol, and a polar head group is joined by a phosphodiester bond. इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे तो ये जो बातें हम बोल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगी. Other two polar OH groups C1 and C2 of glycerol are esterified by fatty acids, which are also designated as R1 and R2. They serve primarily as structural component of membranes and are never stored in large quantities. So these are structural lipids, and these are not storage lipids. Phospholipid molecules self-orient at lipid-water interface, a property of tremendous biological significance in membranes and other lipid assemblies. इसकी इम्पोर्टेंस और इसके फंक्शंस हम पहले भी देख चुके हैं. तो ये बेसिक फॉस्फोलिपिड है. यहाँ पे आप देखिए बैकबोन स्ट्रक्चर
ग्लिसरॉल का है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये फर्स्ट नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर की गई है। सो दिस इज C1, C2, इनका जो ये नाम लिखा हुआ है इन पे OH एंड OH फ्री है, और ये यहाँ पे फैटी एसिड से इस्ट्रीफाइड रहते हैं। सो जो फैटी एसिड यहाँ पे लगेगा वो R1 कहलाएगा, और जो यहाँ पे लगेगा वो R2 कहलाएगा। उनकी नेमिंग होगी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नॉमेनक्लेचर होगा कुछ। तो जनरल फॉर्मूले में हम उसको R1 यहाँ पे और R2 यहाँ पे होगा। देन थर्ड कार्बन पे CH2OH, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, और फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप के थ्रू ये यहाँ पे लिंक्ड है। ये हाइड्रोफोबिक मॉइटी है। C3 of glycerol and a polar head is joined to hydrophobic moiety by a phosphodiester bond. O है CH2OH और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड एस्टिफाइड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रही है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं C3 पोजीशन पे, जिससे वैरायटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं और वो मेम्ब्रेन लिपिड बनाने में काम आते हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड, जो पहला अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, दिस इज द फर्स्ट फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेटिडिक एसिड, phospholipid. In simplest glycerophospholipids, X is H, and it is known as phosphatidic acid. It is important as an intermediate in the synthesis of triacyl glycerols as well as phosphoglycerols, but it is not found in any great quantity in tissues. अभी पहले ही बोल चुके हैं कि मेम्ब्रेन लिपिड्स बन रहे हैं, तो ये जो हमने जनरल स्ट्रक्चर दिखाया था उसका नाम है फॉस्फेटिडिक एसिड। और X कहाँ पे लग रहा है? CH2OX, सॉरी O, इस वाले O से H लगा हुआ है। अब हम वेराइटीज देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड की। तो अब ये तो फॉस्फोलिपिड हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें ये OH मॉइटी जो है, यहाँ से H पार्ट जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में X भी लिख सकते हैं। तो इससे रिप्लेसमेंट होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। Glycerophospholipids. The glycerophospholipids are most abundant among all membrane lipids in eubacteria and eukaryotes. These are also called phosphoglycerides. Diacyl glycerol phosphate and contains SN glycerol 3 phosphate, whose OH of C1 and C2 are esterified by two fatty acids. A second alcohol X, the head group, is esterified to OH of C3 glycerol via phosphodiester linkage. Glycerophospholipids are therefore amphiphilic molecules with non-polar aliphatic chain, tails and polar phosphoryl X heads. अभी स्ट्रक्चर आएगा तो फिर हम फिर से समझाएंगे। Glycerophospholipids differ in structure of their head groups. However, all of them contain two non-polar long fatty acid chains. The glycerophospholipids are charged at pH near 7. Negative charge on phosphoric group
And in addition, the head alcohol group may also have one or more electric charges. अब जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को ठीक से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से चार्ज प्रेजेंट है एट pH नियर 7, जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल pH होता है। जैसा कि हमने इससे पहले बोला था कि यहाँ पे ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है CH2OH, तो H इस्टिफाइड है एक फैटी एसिड से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से। दूसरा यहाँ पे O से H रिप्लेस करके यहाँ पे एस्टिफिकेशन हुआ है दूसरे फैटी एसिड से। फिर ये थर्ड मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लगाया और उसके यहाँ पे H को रिप्लेस करते हुए X लगेगा। तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो जो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेटिडिक एसिड है सिंपल, उसमें ये नेगेटिवली चार्ज है। अब अगर यहाँ पे H है तो ये सिंगल नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है तो उस पर कितना चार्ज है वो उसके हिसाब से टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज दिखता है। Glycerophospholipids are internal zwitterions. The alcohol moiety determines the net sign and magnitude of charged groups. Zwitterions आप जानते हैं, zwitterions वो होते हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो साइमल्टेनियसली, देन this kind of molecule is known as zwitterions. तो यहाँ पे जैसे कि अमीनो एसिड zwitterions थे, वैसे ये भी zwitterions है। This property has great significance in determining permeability of molecules through the membrane. मेम्ब्रेन से इनकी परमिएबिलिटी होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। This is the source from where these structures are taken. You can see the zwitterion. फॉस्फोरिक ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की बैकबोन है CH2OH, जो कि एक R1 यानी कि फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से एस्टिफाइड है। यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल है जो R2 से या R" से दिखाया है यहाँ पे, वो उससे लॉन्ग चेन फैटी एसिड से एस्टिफाइड है। ग्लिसरॉल का थर्ड मॉलिक्यूल, उस पर पहले तो फॉस्फोरिक एसिड लगा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, देन कोलिन मॉलिक्यूल लगा है जो कि नेट नेगेटिवली चार्ज है, as result of which this molecule is a zwitterine. इसी तरह से आप ये देखिए और भी लंबा एक एक्चुअली ये आपको ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो 1,2 डाई डिकेनोइल SN ग्लिसरो 3 फॉस्फोकोलिन मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल का ओपन व्यू दिखा रहे हैं, जो ये इस तरह से दिखाया जाता है कि ये इतने लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जुड़े हैं फॉस्फेटाइडल कोलिन में। दिस इज द ऑफिशियल नेम। Saturated C16 and C18 fatty acids are usually occur at C1 position of glycerophospholipids, and C2 position is often occupied by an unsaturated C16 to C20 fatty acids. ये एक फैक्ट है कि C1 पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा और वो उसकी जो चेन लेंथ है वो 16 to 18 हो सकती है, जबकि C2 पोजीशन पे जो फैटी एसिड लिंक्ड होते हैं मोस्टली वो अनसैचुरेटेड होते हैं और C16 से C20 तक की उनकी चेन लेंथ होती है। Thus, these lipids are also named according to the identities of these fatty acid residues. Some glycerophospholipids have common names too, like lecithin for phosphatidylcholine and cardiolipin for diphosphatidylglycerol. कॉमन नेम्स भी होते हैं और ऑफिशियल नेम्स भी होते हैं, और फैटी एसिड्स की आइडेंटिटी से भी उनको पूरा ऑफिशियल नेम दिया जा सकता है। Phosphoglycerides contain an asymmetric carbon at position
SN2 position in the glycerol part of their molecule. It has L configuration since it is related to L-glyceraldehyde. एसिमेट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री अमाइनो एसिड्स की पढ़ चुके हैं. नाउ लिपिड्स भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है क्योंकि उनके ग्लिसरॉल के सेकेंड पोजीशन का कार्बन एसिमेट्रिक है. 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से एटम से उसकी चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं. और कन्फिग्रेशन में जो ये स्टैंडर्ड ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उससे उसके कन्फिग्रेशन के हिसाब से जो नेचुरली अकरिंग लिपिड्स है वो एल कन्फिग्रेशन में पाए जाते हैं. Now, common glycerophospholipids present in biological membranes contain head groups derived from polar alcohols. कॉमन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स अभी तक जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं और हेड ग्रुप्स जो है पोलर अल्कोहल से बने हुए होते हैं जो कि आप नीचे की टेबल में देखेंगे. अब टेबल X एंड OH हो सकता है, फॉर्मूला फॉर X H हो सकता है. ये C3 पोजीशन की बात बता रहे हैं जो मैंने आपको दिखाई थी. ये यहाँ पे OX ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पे O जो है इधर है, X इधर है. तो X अब क्या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए H है. दिस इज फॉस्फेटेरिक एसिड. कोलिन अगर नाम है उसका तो ये फॉर्मूला है फॉस्फेटाइडल कोलिन लेसिथिन कहलाता है. इथेनॉल अमीन के लिए फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन है, सिफेलिन्स कहलाएंगे वो. सेरीन है, सेरीन अगर X की जगह पे है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और दैट इज फॉस्फेटाइडल सेरीन. दीज टू आर सिफेलिन्स. ग्लिसरॉल है अगर तो फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल है, यानी कि दूसरी मोइटी, यहाँ पे दूसरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल हो गया. देन फॉस्फेटाइडल खाली ग्लिसरॉल है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल है. ओके यहाँ पे अगेन एक ग्लिसरॉल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल फिर से प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कार्डियोलिपिन. एंड देन फाइनली मायोइनेसिटॉल. आप उसका ये देखिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है मायोइनेसिटॉल, इनेसिटॉल एक्चुअली, और ये मायो वेराइटी का मायोइनेसिटॉल है. फॉस्फेटाइडल इनेसिटॉल कहलाता है और ये सारा यहाँ X मोइटी पे प्रेजेंट है. अब इनको अकेला अकेला हम इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन्स. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कंटेन कोलिन, कोलिन मॉलिक्यूल, फॉस्फेटाइडल कोलिन. अगर ये इसमें जुड़ा हुआ है कोलिन मॉलिक्यूल तो वो फॉस्फेटाइडल कोलिन है. शॉर्ट फॉर्म है PTD CHO. These are most abundant phospholipids of the cell membrane and represent large proportion of body's store of choline. ये फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये सोर्स आपके फिगर के बाद दिया गया है कि फिगर कहाँ से ली गई है. आपको पढ़ाने के पर्पज से ली गई है, मेरी बनाई हुई फिगर्स नहीं है इसमें ज़्यादातर. लेसिथिन्स की इम्पोर्टेंस क्या है या उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या है. द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स स्पेशली इन द लिवर ऑफ एनिमल्स and what happens in their absence. Accumulation of lipids occur in the livers to as much as 30% against the normal value of 3 to 4%, giving rise to a condition called fatty liver. This fatty infiltration may lead to fibrotic changes characteristics of the liver disease cirrhosis. Choline is important as acetylcholine in nerve impulse transmission and store of labile methyl groups. And more properties of lecithins. Dipymetyl lecithin is very effective surface active agent and the major constituent of the surfactant preventing adherence due to surface tension of the inner surface of lungs.
Its absence from lungs of premature infants causes respiratory distress syndrome. तो आप इम्पोर्टेंस देखिए कि लेसिथिन की कितनी है. These lipids are cationic at pH 7 and account for greater than 50% of phospholipids in most eukaryotic membranes. आप स्ट्रक्चर देखिए इनका ऐसा होता है. It self organizes spontaneously as a planar bilayer in which each phosphatidylcholine has nearly cylindrical molecular geometry with lipidic tails facing each other and polar head groups interfacing with the aqueous phase. Polar head groups हैं तो वो water molecule से या polar phase से ओरिएंटेशन करते हैं, और जो नॉन एक्वस फेज है वो टेल के फॉर्म में एक्वस से अलग रहता है. इसकी कोन शेप भी मिलती है और कोन शेप में लाइसोफॉस्फेटाइल कोलिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइसोफॉस्फोलिपिड. Most phosphatidylcholine molecules have one cis unsaturated acyl chain, which renders them fluid at room temperature. Membrane fluidity में phospholipids का unsaturated fatty acid उनमें present होना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड रहे और उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए मूवमेंट हो सके. Partial hydrolysis of lecithins by lecithinases, active principle found in snake venom, causes removal of only one fatty acid to yield substance called lysolecithin. These contain only one acyl radical. When subjected to bloodstream by sting as a result of snake bite, the lysolecithin cause rapid rupture of red blood corpuscles. तो स्नेक वेनम में इसका ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो कि हीमोलाइसिस कॉज करता है. नाउ सिफेलिन्स, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन पहले देख रहे हैं, जो कि सेरीन भी हो सकता है. फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन दोनों मिलके सिफेलिन्स बनाते हैं. दे डिफर फ्रॉम phosphatidylcholine only in that ethanol amine or serine respectively replace choline. Phosphatidylcholine ethanol amine remains cationic and phosphatidylserine remains neutral at pH 7. Venom containing lecithinases also split off fatty acids from cephalins, leaving hemolytic lysocephalins. सेम इनकी ये प्रॉपर्टी है. आप स्ट्रक्चर देख लीजिए दोनों का. स्ट्रक्चर एंड सोर्स कहाँ से हमने लिया है, क्योंकि इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं इंटरनेट पे. दैट प्रिवेंट्स माय टाइम ऑल्सो, saves my time also, and I can focus on various other things instead of making all the structures. The inclusion of phosphatidylcholine and ethanolamine by layers imposes a curvature stress onto the membrane, which is used for budding, fission, fusion. इन दोनों की वजह से एक मोड़ने की प्रॉपर्टी रहती, कर्वेचर बनने की टेंडेंसी है इनकी. तो ये गोल होने की टेंडेंसी करते हैं, उससे एक स्ट्रेस या फोर्स डेवलप होता है मेम्ब्रेन्स पे, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन्स में कंटिन्यूअस बडिंग्स होती रहती है, फिजन होता है और फ्यूजन होता है. नॉन bilayer lipids like ethanol, phosphatidyl ethanolamine and cardiolipin may also be used to accommodate membrane proteins and modulate their activities. An additional factor that contributes to curvature stress in biomembranes
is the asymmetric distribution of various lipids between two bilayer leaflets. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेम्ब्रेन्स जो है एसिमेट्रिक होती हैं, दैट इज बाइलेयर का एक सरफेस डिफरेंट वैरायटी के फॉस्फोलिपिड्स कंटेन करता है, जबकि दूसरी सरफेस डिफरेंट वैरायटी के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैरी करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इनका अनइवन होना है उसकी वजह से एक कांस्टेंट फोर्स मेम्ब्रेन पे रहता है, जिसकी वजह से उनका कर्वेचर बनना, उनका मुड़ना, उनमें से डिफरेंट फंक्शंस होने का की प्रॉपर्टी मिलती है. In humans, metabolism of phosphatidyl ethanolamine is thought to be important in heart. When blood flow to heart is restricted, the asymmetrical distribution of phosphatidyl ethanolamine between membrane leaflet is disrupted, and as a result of which membrane is disrupted. तो जब ब्लड फ्लो हार्ट में रेस्ट्रिक्ट होता है तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डिसरप्शन होता है और फिर अल्टीमेटली मेम्ब्रेन जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी कि एक लेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और दूसरी लेयर में जो डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाता है, वो कभी कभी ऊपर भी चले जाते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अपोप्टोसिस में फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशंस होते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में वर्टिकली लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड फिर अल्टीमेटली मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है. Phosphatidyl ethanol amine plays role in secretion of lipoproteins in liver. Additionally, it is able to propagate infectious prions without assistance of any protein or nucleic acid. ये prions के propagation में helpful होते हैं. It is also thought to play a role in conjunction with phosphatidylserine in increased rate of blood clotting. Blood clotting में भी इनका रोल होता है. When phosphatidylcholine is the principal phospholipid in animals, phosphoethanolamine is principal one in bacteria. कोलिन वाली फॉस्फोलिपिड एनिमल्स में ज़्यादा होती है, इथेनॉल अमीन वाली फॉस्फोलिपिड बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है. वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ इथेनॉल अमीन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इज टू स्प्रेड आउट द नेगेटिव चार्ज कॉज्ड बाय एनायनिक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स. अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसी मेम्ब्रेन हो, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो और उसके अकॉर्डिंगली सेल में फंक्शन होता है. इन द बैक्टीरियम ई कोलाई phosphatidyl ethanolamine play a role in supporting active transport of lactose into the cell, while lactose permease, which is an integral membrane protein, and may play a role in other transport systems as well. Phosphatidyl ethanolamine plays a role in assembly of lactose permease and other membrane proteins. It acts as a chaperone to help the membrane proteins correctly fold their tertiary structure so that they can function properly. तो प्रोटीन के करेक्ट स्ट्रक्चर अज्यूम करने में भी इनका रोल होता है, शेपरॉन की तरह यूज होती हैं ये. When ethanolamine is not present, the transport proteins have incorrect tertiary structures and do not function correctly. Phosphatidyl ethanolamine allows the formation of intermediates that are needed for the transporters to properly open and close. It also enables bacterial multi-drug transporters to function properly.
so many roles these variety of membrane proteins have, and you can see from the this literature that they play a very, very important role in the life of cells. अब आया कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन सिग्नेचर फॉस्फोलिपिड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का सिग्नेचर फॉस्फोलिपिड है. Phosphatidic acid is a precursor of phosphatidylglycerol, which in turn gives rise to cardiolipin. Cardiolipin is an important and major component of the inner mitochondrial membrane, and it is synthesized here only. It constitutes 20% of total lipids present here. Cardiolipin is found almost exclusively in eukaryotic mitochondria and in bacteria. आपको पता होगा कि ये बैक्टीरिया ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो कि ऐसा माना जाता है और प्रूफ भी है कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यूकैरियोटिक सेल में अंदर चला गया और वहाँ पे फिर वो रहने लगा. और अब हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या फंक्शन है. कार्डियोलिपिन इज फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, mitochondria and bacteria that utilize oxidative phosphorylation for proton pumping across the membrane. Thus, this is an evidence for endosymbiont theory, जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो बैक्टीरिया ही यूकैरियोटिक सेल बनाता है. Cardiolipin has a unique property of being both a bilayer and non-bilayer lipid depending on the absence or presence of divalent cations. Now you can see the structure of cardiolipin. CH2O, यहाँ से P, अगेन इधर भी P है, and this is one glycerol molecule, this is another glycerol molecule, and this is the third glycerol molecule. So this makes cardiolipin. This is the source of this figure, and now the properties of cardiolipin. Cardiolipins form a bicyclic resonance structure. अभी आपको हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा. It can change its conformation and aggregation behavior as the cellular condition change. That is pH and divalent cations. It's bicyclic structure. You can see here. These two are in resonance with each other. These two structures. Rather than displaying two pK values in the range of 2 to 4, pK2 of it is in 8.5, indicating that it is protonated at physiological pH. This property may make it a proton sink or conduit for protons in the transfer processes. Oxidative phosphorylation. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और वहाँ पे फिर कार्डियोलिपिन की प्रेजेंस का रोल है. सिमिलरली बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करती है. सो
cardiolipin is present there. Cardiolipin is required for optimal activity of carrier proteins present in the inner membrane of mitochondria, playing role in substrate transport across the membrane and enzymes. For electron transport chain, it acts by holding enzyme complex quaternary structures together and organize various components into higher order assemblies termed respiratory supercomplexes. Mitochondrial complex 3, ubiquinone cytochrome C oxoreductase, requires cardiolipin 1 complex, complex 4 cytochrome C oxidase, requires 2 cardiolipin, and complex 5 ATP synthase and binds 4 cardiolipins. In relation to energy metabolism, cardiolipin anchors 2 kinases, mitochondrial creatine kinase and nucleoside diphosphate kinase, to the inner and possibly to outer membrane where they come in contact. Cardiolipin is involved in different stages of mitochondrial apoptosis process as well as in mitochondrial membrane stability and dynamics. Cardiolipin interacts with a variety of death-inducing proteins, including cytochrome C. Cardiolipin-bound cytochrome C acts as a peroxidase capable of catalyzing H2O2-dependent cardiolipin peroxidation, which is an essential step in release of cytochrome C during apoptosis. The process of apoptosis also requires presence of cardiolipin molecule. Now, phosphatidylinositol. It is present as stereoisomer myoinositol. This is an important constituent of the cell membrane phospholipid. It has role in cell signaling, lipid signaling, and cell trafficking. And this is the structure. This is glycerol molecule, R1, R2, and R3, then phosphoric acid, and then myoinositol, stereoisomer inositol. Now, structure of plasmalogen. These are the compounds in which C1 substituent to the glycerol moiety is linked to it via an alpha-beta unsaturated ether linkage in cis configuration rather than through an ester linkage. इससे पहले के जो भी वेराइटीज़ थी उसमें फैटी एसिड ईस्ट्रिफाइड था. अब यहाँ पे ईथर लिंकेज है. Ethanolamine, choline, serine form the most common plasmalogen head groups. Typically, alkyl radical is an unsaturated alcohol. In some instances, choline, serine, or inositol may be substituted for ethanolamine. At SN2 position, plasmalogen are enriched in polyunsaturated fatty acids, specifically docosahexaenoic C22 6-omega-3 DHA, or arachidonic acid, which is C20 4-omega-6 AA. अब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए. यहाँ पे ये ईथर लिंक है. देन ये पॉलीअनसैचुरेटेड है, जबकि इससे पहले वाले फॉस्फोलिपिड्स में यहाँ पे भी ईस्टर लिंकेज था, लाइक दिस, बट हियर दिस इज ईथर लिंकेज, और फिर यहाँ पे
इथेनॉलामीन, कोलिन, सेरीन एंड इनेसिटॉल, सारी वेराइटीज जो अभी पहले पढ़ी थी वो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकता है. Organs and cells like brain, heart, kidney, lung, skeletal muscle, neutrophils, eosinophils, and mature spermatozoa are enriched with plasmalogens. Plasmalogens are also significant components of subcellular membranes, including nucleus, ER, post-Golgi network, and mitochondria. However, they have not been detected in peroxisome membranes. They are also concentrated in specialized membranes such as sarcolemma and myelin, and secreted membranes such as synaptic vesicles, secretory granules, and surfactants. The lowest amount of plasmalogens are found in liver. This could be explained by their synthesis in liver and subsequent transport by lipoproteins to other tissues. Tissue plasmalogens levels relate to organism age. They are essential for brain function, which includes regulating ion transport and cholesterol efflux, acting as a precursor for icosanoid and platelet activating factors, as well as supporting membrane fusion and antioxidant activities. So, this was all for today. If you like my lecture, please like it, subscribe it, and share it. This is all for today, and it's third part of membrane lipid section will come later.